start with our next module, and over here I'm going to take a machine called Hackable, which is a vulnerable machine with a series of web application part, and the IP address which is 192.168.0.119. And over here on my Linux machine, I can see this is the IP address of the machine, and we have selected the DBWA machine. Before that, if you write down IP address 192.119, you will see some vulnerable applications just like over here, which is as contains some 12 vulnerable machines: DBWA, Multidata, BWAP, WordCat, ComXCD. You can check all these things one by one. But today we're going to start with the DBWA machine. So DBWA stands for Damn Vulnerable Web Application for penetrate your skills on the PT part. And over here, as we have discussed the last time, we're going to start with Avast Top 10 with the Gray Campus. I basically prefer the Brave Campus. You can use any of the websites. For example, there are lots of websites over there. So my major concern is over here. We're going to check all the possibilities one by one. So Avast Top 10 Open Web Application Security Project, which helps an organization to secure their web application and APIs. So we have to focus on the top 10 critical vulnerabilities, and each and every 3 to 4 years they change their policies over there. Yes, and we're going to try all the penetration skills in our DBWA part. So I'm already using Burp Suite over here. You can see it's already has been scanned. So our major concern that I already have inserted the CS certificate also. So there's no issue. So today we're gonna start with the DBWA, and the username is admin, and the password is default password. So today we're gonna penetrate our skills with the help of this one. So over here we can see damn vulnerable web applications is a PHP MySQL web application that is damn vulnerable. Its main goal is to be an aid for security professionals for test their skills and tools in legal environment. So, as per there are some critical vulnerabilities over here, just like a brute force attack, command injection attack, CSRF attack, file inclusion, file upload, insecure captcha, explanation that we have already done. We're going to try the weak session ideas from Crossset scripting, like your XSS, DOMBEX, respected, and stored. And the most important part, each and every DBW has a vulnerability. So it has low, medium, high, and impossible. So you can see they have given a word called capture the flags. The option is extension to medium difficult with a mixture to harder of alternative bad practices, and the vulnerability may allow the same extent of the exploitation similar to the various capture the flag combinations. So we can start with the low objective. Give me some time over here.
Yes, sorry. हाँ जी, बोलिए. Anyone install hackable secret VM with the VM workstation? No bro, I opened link and swap. Okay, ठीक है. ठीक है. चलो. So let's move on over here. So we're gonna start. You can see they have some good challenges. So what we're gonna do? We're gonna try one by one all the things. So over here, this is your OWASP top 10 and the brute force attack. The brute force attack over here is count on your. It's the first one is your injection part, which is your SQL injection that we have already done. So we know about injection attack is an attack where an attacker simply insert a malicious piece of code on the server side to execute and initiate commands in the backend process because we have only the front end. And over here, if you see that we can see the second one, which is your broken authentication. So broken authentication is count on your brute force attack. As we have done brute force attack in the burp suite with the help of intruder, if you remember. So broken authentication occurs when the application is mismanaged session-related information such as your user identifier get compromised. The information can be in form of session cookies, passwords, secret keys, etc. There are many techniques that can be used to identify the threats. So our major concern, how we can simply log on or we can compromise any user identification. So in this scenario, for example, attackers try many techniques. For example, one of the techniques is known as dictionary attack or brute force attack. Oh, sorry, did I say the dictionary attack? No, it is brute force attack. A brute force attack where an attacker has a word list which contains some username and passwords and try to hit on the login forum. Okay, so for example, you can see over here, the aim here is to gather to get someone else's session or get a session with the ended by the user steal session related information. So what I'm going to do, over here, we have a proper login forum, but the most important thing is to check the source code. As a developer, sometimes they make some issues over there. For example, you can see if asset there's a login parameter, get parameter with the username, the get password with the pass over here, and if they have cross-verified with the username and password, they're gonna check from the database server. They're gonna check from the database server away. So you can see MySQL query, global station, die. You can see proper one by one to fetch the data from the server side associated. So over here, but there is no authentication means there is no limit has been given. Limit means if the attacker or if the client has been submit the data twice or thrice in a proper way. एक बार तीन बार करने के बाद अगर वो आप चार बार करने के बाद अगर वो आपके रिक्वेस्ट को ब्लॉक नहीं कर रहा तो एक अटैकर एक सिंपल एक कंप्लीट ब्रोकन ऑथेंटिकेशन अटैक परफॉर्म कर सकता है वहाँ पे. आप खुद एग्जामिन करो कि जब भी आप कोई यूजर नेम एंड पासवर्ड फील्ड में 3 से 4 बार कुछ इनवैलिड आउटपुट डालते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि वो एक सिंपल चेक करता है कि एक क्लाइंट ने कितनी बार वहाँ पे डेटा वैलिडेट किया, एक सेशन को पीरियड ऑफ टाइम के लिए ब्लॉक कर देता है. तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, आई एम गोना परफॉर्म अ ब्रूट फोर्स अटैक एंड आई एम गोना ट्राई वन बाय वन. सो मेरे पास एक वर्ड लिस्ट है. So over here you can see I have a word list over here which is burp test, जहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे यहाँ पे. अगर आप यहाँ पे देखो क्रॉस सिक्योरिटी, admin, security, password, root, tor, hacker, call, prince. These are some words which is given over there. And how many words are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 words are there. So मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मान लो कि मेरे पास एक डिक्शनरी है जिसमें सारे के सारे यूजर कंटेंट मिलते हैं. चलो इसको एक बार ट्राई करते हैं. सबसे पहले तो फाइंड आउट करते हैं कि यूजर नेम कोई एग्जिस्ट करता है कि नहीं. जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं अपना क्रॉ का नाम डालता हूँ, क्रॉसेट, पासवर्ड 1 डाल देता हूँ नॉर्मल, यूजर नेम पासवर्ड इनकरेक्ट. लेट्स ट्राई विद द वर्ड एडमिन. यानी कि दोनों में एडमिन में भी यूजर में पासवर्ड इज इनकरेक्ट.
देख रहे हो आप? तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या कर रहा है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बना रहा है कि ये फर्स्ट वाले के साथ सेकंड वाले के साथ वैलिडेट करेगा ही करेगा आपके ऑथेंटिकेशन के लिए। मान लो कि अगर उस डेटाबेस में मेरा नाम अगर सेव होता, जैसे पार्थो मैंने डाल रखा है, और अगर मैंने यहाँ पे गलत पासवर्ड डाल रखा होता, तो यहाँ पे एक एरर आता कि सिंपल यूजर पासवर्ड पार्थो हैज इनकरेक्ट। इट मींस द यूजर पार्थो इज ओवर देयर। सो ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे वी कैन यूज वर्ब स्विट ओवर हियर। वी कैन ट्राई टू एनुमरेट ऑल द थिंग्स वन बाय वन। So for example, you can see 192.168.0 to 119, which is my IP address, and I can see some parameter values, which is your login.php, security.php. Or you can try to use active scan. As we have mentioned here before, that active scan is to identify all the loopholes on the server side. And it's going to create some issues. So let it be on the side. Our main objective is to check the brute force attack, broken authentication attack, or I say a proper meaning of simple brute force. In cryptography, a brute force attack consists of an attacker submitting many passwords and phrases with the hope of eventually guessing the correctly. The attacker systematically check all the possible password and phrases until its correct one is found. See. So what we're going to do over here, I'm going to parse some values. For example, let's use proxy, and I'm going to use interception on. So I'm going to parse the data. And you can see over here, the data is transferring from the URL section. So, and the data might be over here. Okay, wait. The data has intercepted. Yeah, you can see over here, the username and password, which is over here. So our major objective would be we're gonna perform a brute force attack on the username and password parameter on the login.php file. And this is security low, as we know, and we have a session ID number. So the main objective, what I'm gonna do, I'm gonna send this one on to Intruder. Intruder is highlighted now. We're gonna drop the packet. I don't need right now. So we have the packet which is over here, which is 192.168.0.19, and the position is important. Why? Because we're gonna attack on the vulnerabilities of brute force. So we're gonna check all the things one by one. So we have 1, 2, 3, 4, 5 payloads over here. Our main objective is to check either the username and the password are be broken up, performed by brute force or not. Sometimes it's crash, so we have to check this one also. I have config. Yes, it's 119. Yes, cool. So over here, let's go to the dictionary part. So we're gonna clear all the tags because we are going to attack on the username and password field only. So it's a username and password field. So what we're gonna do, we're gonna perform a brute force attack, and I'm gonna highlight the value, which is 1, and I'm gonna add value tag because the first payload we're gonna set is the username payload. If we have a choice to only find the username parameter, I'm gonna use only the sniper attack. If you want to find a specific value. So let's try with the sniper first of all. So in this scenario, I'm going to use sniper, and I'm going to set a payload, which I simply use it. I'm going to use a simple list, and I'm going to load payload, which is my burp.txt file, which contains all the words, which is 10 words. So we're going to perform a brute force attack with a 10 words combination. So let's try. Is it pinging or not? Let me check. Yes. Okay, the scan has been done, and I can see.
Oh, there was a different value which is 96, and you can see all the values are 175, but the important thing is 200, which is your status code, which means the request has been completed. But through the response we have to identify. Username and password is incorrect. See, let's try to check this one, which is a maximum length of the packet. So it was password. Okay, so also username and password is incorrect. Now what I'm going to do, I'm going to try combination and permutation and combination. So we're going to add password parameter also. And over here I'm going to use the attack type, which is your cluster bomb. Cluster bomb is an attack where we're going to check all the permutation and combination over here one by one. So we're going to use cluster bomb. The payload to select, we're going to use the same dictionary because we're going to perform a permutation and combination with the help of single dictionary attack. So 10 into 10, which will be 100. So it's going to multiply with each other. And go over here in the options and start attack. And over here you can see all the request codes are 200 over here. It means the services has been executed properly. But over here, the most important part is you can see all the status code, which is 200. It means the code has been executed properly. Let's try with the first one, which is Crossset. The most important thing is to examine the behavior of the client request and the server response. So the client request, which was submitted username Craw and password Craw. So let's check the response, but we will get a hit over there. And what I can see over there is the username and password is incorrect. Let's check the maximum length of the packet. Maximum length of the packet means the execution process. So response headers. You can see welcome to the password protected area. It means we have a proper access on the server side. So, but the most important thing is to examine that there were around 100 of requests has been created over there. 100 of requests. 100 of parameter requests has been created one by one. You can see. Our major objective is to check all the possibilities over there one by one. A username and a password. A username and a password should be combined. And this attack may be cause lots of further things. So सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि नॉर्मल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पैरामीटर्स की बात हो रही है कि आपके फर्स्ट पैरामीटर के साथ सेकंड पैरामीटर के साथ चेक होना चाहिए और नंबर ऑफ रिक्वेस्ट अगर इतने 100 ऑफ रिक्वेस्ट एक क्लाइंट साइड से क्रिएट हो रहा है तो इट शुड बी ब्लॉक बिकॉज देयर वाज नो वाइट लिस्टेड ओवर देयर एन अटैकर सिंपली परफॉर्म वेरियस टेक्निक्स टू परफॉर्म ऑर्डर जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर कॉपी द रिक्वेस्ट let's paste it over here. Welcome to the password area. We are in. और ये मुझे कैसे पता चला अगर आप सोर्स कोड देखते अगर आप फेल्ड होते हो अगर आप लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो आपको सीधा यहाँ पे वेलकम टू द पासवर्ड एरिया एडमिन मिलेगा अदरवाइज अगर आप फेल्ड होते हो तो यूजर नेम पासवर्ड इज इनकरेक्ट तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बैकएंड के सोर्स कोड को रीड करना एग्जामिन करना कि वो क्या हो सकता है आपका तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि अगर मैं इसका एक थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ा दूंगा अब आप यहाँ पे देखो यहाँ पे अब प्रॉपर एक सैनिटाइजेशन लगा रखी है सैनिटाइज पासवर्ड इनपुट ग्लोबल माइसिक्वल ठीक है यहाँ पे प्रॉपर दे रखा है माइसिक्वल सर्वर एरर बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे देखो MySQL convert.to fix the MySQL convert code and the code does not work error
ब्रेक पॉइंट, चेक द डेटाबेस, ये सैनिटाइज करेगा, पहले इसे चेक करेगा, फिर इसको डेटाबेस में से चेक करेगा, फिर आपको अलाउ करेगा गेट यूजर नेम, यानी कि यहाँ पे प्रॉपर स्टेजेस दे रखे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ ब्रूट फोर्स अटैक करने की कोशिश करता हूँ, जैसे लेवल 1 ये लेवल 2 है, ओके यस इंटरसेप्ट करते हैं, सेम डिक्शनरी यूज करूंगा इसमें, action, intruder, drop the packet, positions, clear tags, same this one, add parameter value, cluster bomb, permutation and combinations, payload select, bug.txt file, and options. Let's see this one. Start attack. Now you'll see the request has been checked one by one on the server side. देख रहे हो यहाँ पे पहले क्या हो रहा था, सैनिटाइज नहीं हो रहा था, चेक नहीं हो रहा था, सीधा डेटाबेस में जाके वो कर रखा था। अब यहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइज लगा रखा है, एक एक पैरामीटर को चेक करेगा उसके साथ, फिर वो डेटाबेस को चेक करेगा, फिर अलाउ करेगा। So there will be lots of chances that can be happen over there one by one. सर पहले क्या हो रहा था? पहले वो सीधा डायरेक्ट अटैक कर रहा था यूजर नेम एंड पासवर्ड फील्ड में, और वो डेटाबेस में चेक भी हो रहा था। अब क्या हो रहा है कि सिंपल वो एक एक यूजर नेम पासवर्ड को, यूजर नेम को पहले चेक करेगा डेटाबेस में, फिर पासवर्ड को डेटाबेस में चेक करेगा, तब उसे अलाउ करेगा। ओके तो इट्स गोना टेक अ लॉन्ग प्रोसेस। अगर हम यहाँ पे देखो इट टेक सम टाइम, बिकॉज यहाँ पे अभी तक 100 भी नहीं पहुंचे, 30 रिक्वेस्ट गई हैं, बट वी नो दैट द यूजर नेम एंड पासवर्ड इज एडमिन। बट जब तक आपका ये आपका फिनिश नहीं होगा तब तक आप कैसे देखोगे उसे? So there would be some time taken period, and all the things are important over here. You see, that's why most of the parameter values over here should be read carefully when you're doing the pen testing part. Most of the pen tester, they are basically use worksuite for the examination of behavior of the client and the server. That's why in the real life scenarios, these books are really helpful. The Web Application Hacker Handbook 2 and Web Hacking 101, which will allow you to check all the possibilities one by one. जैसे अगर आप यहाँ पे देखो बहुत सारे टूल्स दे रखे हैं, बहुत सारी टेक्निक्स दे रखी हैं जिसमें थ्रू आप इसे अटैक कर सकते हो। ओपन रिडायरेक्शन वल्नरेबिलिटीज, HTTP पैरामीटर कोलिशंस, क्रॉस-साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी, HTML इंजेक्शन, CRRF इंजेक्शन, क्रॉस-साइट स्क्रिप्टिंग, template injection, SQL injection, server-side request forgery, XML entities, vulnerabilities. You can check one by one. Our major agenda is to check all the vulnerabilities. जिसमें आप ये आपकी बाइबल है, first of all. This is your Bible that can be used in various techniques and some other few techniques. It's already done. So we can see the first one, which is your admin and password over here, to perform a proper brute force attack on the server side. So you can see the positions that we have already used, the payload and the options. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एप्लीकेशन को समझना कि एक्चुअली एप्लीकेशन किसके लिए बनी है। दैट्स वाई मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, बिहेवियर।
ये देखो there are some SQL injections over there. Username parameter, security cookie parameter, there is a view source parameter, name of an arbitrary applied URL parameter. Workshop will automatically find the vulnerabilities in backend server. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको चेक करना है, एक हर एक चीज़ को वैलिडेट करना अटैक फेस में, इसमें क्या क्या हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपके उसके रिकॉर्ड्स को रीड करना, सारे के सारे, कंपेयर ऑल लेवल्स, इम्पॉसिबल लेवल, जो सबसे ज़्यादा कोड दे रखे हैं. अगर आप यहाँ पे देखो, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज टोटल फेल्ड लॉगिन 3 बार, देख रहे हो. अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर 3 बार 3 से ज़्यादा अगर वो फेल होता है तो यहाँ पे उसको 15 मिनट या 15 सेकंड के लिए ब्लॉक कर दो. देख रहे हो आप, चेक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज, सैनिटाइज यूजर इनपुट, सैनिटाइज पासवर्ड इनपुट, default values, check the database, check username information, check to see if the user has been logged out. There's a proper code that to be over here. जैसे मैं अगर मैं हाई लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे भी इन्होंने दे रखा है चेक द पासवर्ड ऑल्सो. जब मैं सेकंड वाले में सिर्फ वो सैनिटाइज दोनों को कर रहा था. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब आप एक वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो, ये जो चीज़ दिख रही है ये आपकी वाइट बॉक्स पेन टेस्टिंग होती है, जहाँ पे आपके पास सोर्स कोड आपको दे देंगे. इस सोर्स कोड के थ्रू आपको बग्स फाइंड करनी है. Source code vulnerabilities. In the real life scenarios, the web application penetration testing part is all about source code reading, and we should know about some of the basic concept of JavaScript, PHP, and your Node.js file. Is it clear to everyone? हाँ सर. So now you can see there is a vulnerability called command injection attack. Command injection attack, it's also known as your injection part. Injection attack occurs when the user is able to input untested data and tricking the application system to execute initiate command. And the injection could be your SQL queries, your LDAP PHP queries, your LDAP queries, and your OS commands. See. So they have given what to inject. Queries like your queries, OS command, and where to inject, where the user input is required or can be modified. It can be a text box or a request field. So सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको एग्जामिन करना है हर एक चीज़ को, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. जैसे कि अगर आप देखो why to inject to check if the application is vulnerable or not. तो अगर मैं यहाँ पे सिंपली आइडेंटिफाई करूँ कि OS कमांड इंजेक्शन होता क्या है. OS commands, simple OS commands are just like your command that you have entered on your shell code, shell terminal. For example, if you are doing ping command, ping -c number packet of 3 and ping the localhost IP address. See, this is an OS command. ls, this is also OS command. ifconfig, these are OS commands. The major objective of the OS command injection, whether an input can be an attacker can insert a OS command to execute arbitrary commands. Arbitrary command means malicious piece of commands. For example, if you search for OS command injections, OS command is an attack in which the goal is to execute arbitrary commands, which is your malicious commands on the host operating system by a vulnerable application. Command injection attacks are possible when an application passes unsafe user supplied data from cookies to HTTP headers. See, अब मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम हेडर्स की बात हो रही है.
हेडर्स आपकी क्या होती है? These are the headers which is passing through the data. हर एक हेडर्स में आपकी डेटा पास हो रही है, जो कि एक मैसेज बॉडी कंटेन करती है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे एग्जांपल में दे रखा था कि ओएस कमांड इंजेक्शन में एंटर एन आईपी एड्रेस। सो एंटर एन आईपी एड्रेस मींस क्या हो सकता है? तो सबसे पहले तो मैं इसका सोर्स कोड देखता हूँ, वाइट लिस्टिंग करते थोड़ा सा क्या क्या दे रखा है इसमें। सो यहाँ पे सिंपल एक पीएचपी शेल दे रखा है, पीएचपी कोड दे रखा है। इन पोस्ट सबमिट गेट इनपुट which is your target request IP address. Okay, determine OS and execute the ping command. String PHP name execution Windows NT Windows. यहाँ पे एक CMD कमांड दे रखी है, यानी कि शेल कमांड्स, सेल एग्जीक्यूशन जिसमें पिंग कर रहा है और टारगेट की आईपी एड्रेस। सो over here, if it's a Windows command, it will execute normal. But if it's a Linux command, it will send 4 packets of ping on the target machine. See. So सबसे ज़्यादा important क्या है यहाँ पे? यहाँ पे simply बोला है enter an IP address that can be used for ping command. So I'm going to use localhost IP address, which is my 127.0.0.1. So over here, I can see they have given a proper ping request. So यहाँ अगर आप यहाँ पे देखो सिंपल एक पिंग कमांड एग्जीक्यूशन हो गया। So 64 bytes of packet is created and you can see the TTL value is 64 क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना लोकल होस्ट IP एड्रेस स्कैन किया था। तो अटैकर्स क्या करते हैं, जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे पिंग कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पिंग कर रहा था, सेमीकोलन क्यों होता है? सेमीकोलन को यूज होता है एक से दो कमांड ज्यादा मर्ज करने के लिए। पिंग -c नंबर पैकेट ऑफ 3 एंड द लोकल IP address 127.0.0.1 एंड सेमीकोलन। अगर मैं सेमीकोलन में हु एम आई डाल रहा हूँ, या सेमीकोलन के बाद मैं डाल रहा हूँ कि IF कॉन्फिग रन कर दो, या सिंपली हु रन कर दो, या w रन कर दो, तो मैंने यहाँ पे एक ही क्वेरी में 5 अलग अलग स्टेटमेंट डाल रखी है। तो मैं एंटर करता हूँ, सबसे पहले पिंग रन होगा, उसके बाद क्या रन हुआ? हु एम आई वाज रूट, देन IF कॉन्फिग, फिर मैंने यहाँ पे डाला था हु क्योंकि रूट है, एंड w की कौन लास्ट टाइम सेशन में और लॉगिन था। सर पाइपलाइन भी यूज कर सकते हैं ना? यस, अगर आप पाइप यूज करते हो, सिंगल पाइप और डबल पाइप, क्योंकि उनमें दोनों में डिफरेंस है। हाँ सर, डबल पाइप तो तभी होगा ना जो पहले रन होगी फिर बाद वाली रन होगी। डबल पाइप में क्या होगा कि पहले वाला रन होता है। हाँ, पहले अगर पिंग रन होता है तो हु एम आई रन होगा। हाँ, सिंगल पाइप में हु एम आई रन होता है। तो और यहाँ पे एक और चीज है, डबल एंड भी यूज कर सकते हैं, है ना? तो ओएस कमांड इंजेक्शन में क्या होता है कि अगर एप्लीकेशन साइड में कोई कहीं भी एक लोकल यूजर्स कोई भी डिटेल सबमिट कर सकता है, सो देयर कुड बी अ चांस। सो यहाँ पे डॉट 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 वन सेमीकोलन यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ हु एम आई। इट्स व्हाट डेटा। अटैकर्स क्या करते हैं? नेट स्टैट ANTUP
नेटवर्क फाइल्स प्रोटोकॉल्स की कौन कौन से वहाँ पे नेटवर्क एप्लीकेशन चल रहे हैं 22 44 45 3306 139 53 you can see all the applications which is flowing over here. तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि you have to figure out all the possibilities over here one by one. And it can be used in various techniques. So, but attacker can run any arbitrary commands, just like ls-all, present working directory, pwd, and through the command injection attack, an attacker can also get a reverse shell also. For reverse shell, I'm going to use a website called Pentest Monkey. Pentest Monkey reverse shell cheat sheet. So we're going to use the first one. Okay, cheat sheet. Cheat sheet of what? Shell codes. Reverse shell cheat sheet. Sorry. There are bash, there are pulse, bash commands. Listen, bash. Bash is your command line that we already find that one. Perl command, Python command, PHP commands. There are lots of things can be happen. So let's see if let's use the bash command. Bash commands are also used for shell, reverse shell. तो अगर आप यहाँ पे देखो, so let's have an IP address. Let's change the reverse shell IP address, which was 192.168.0.110. क्यों मैंने यहाँ पे 110 क्यों डाली? क्योंकि this is my attacker IP address. When the reverse shell will call, it has a replica to return address, which will work on the port number, and we can assign a port number 4448, which is a random port number. Bin bash -i execution, dev TCP, the device connection part, 448 with the null values 1. And before that, let's give a value. Will this work or not? Before the execution part, let's use netcat. Numeric listening verbose port 4448. Numeric for IP address, L for listening, V for verbose, and the port number that we're gonna use over here. Netstat, ANTUP, and over here I can see the port number 4458 is running in the backend. So let's copy this one and execute. So I'm not sure it will give a reverse shell or not. See, because the bash command didn't work. So what I'm gonna do, I'm gonna look for, do we have Perl? Let's use which Perl. Yes, we have Perl on the server side. So I'm gonna copy Perl execution part. ifconfig 110. So let's change the IP address. And the port number. And let's execute. We are not sure that this will also run or what, but I can see in the backend server there was a Perl command. Bash command didn't work. Okay, so
Yes, we have a shell. See, a proper shell execution on the server side, which can be used in various techniques. So our major concern would be check all the possibilities. Let's check IF config. Yes, we can see that I can run a command over there one by one. So what we're gonna do, we're gonna try to check all the possibilities over there one by one. So I can run any command over there. We are on the server side, we can run any command over there. Export term xterm. So let's write bin bash -i, and who we are www data. You can write who am I, the local privilege user, the low user. Let's use cat etc password to check the current user, and these are the list of users which are present on the server side. daemon, bin, system execution, snack, games, manual, LP, mail. You can see all the possibilities. So if an attacker can simply gain a low user on the server side, it can use it for different techniques. There are many other techniques that can be used over here. For example, most of the attacker, what they do, if they get any access on the server side, they look for what other services are running. There's a MySQL is running over there. There's a port 22 is running. Samba server is running. And look, a connection has been established between the client and the server. So our major objective would be to penetrate all the techniques. For example, अगर मैं इसको close करता हूँ, just कि इसको reset कर देते हैं first of all. So यहाँ पे restart देखते हैं. Okay, it's been hanged. So यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको आइडेंटिफाई करना है सबसे ज़्यादा कि वल्नरेबिलिटीज कहाँ हो सकती है. सर कोई एग्जांपल बता सकते हैं क्या? कमांड लाइन इंजेक्शन वेबसाइट. कमांड लाइन इंजेक्शन बेसिकली आपकी जहाँ पे भी आपकी यूजर एग्जीक्यूशन हो सकती है, कमांड एग्जीक्यूशन हो सकती है. अभी आप ये समझो कि ये एग्जीक्यूशन काम कैसे करता है. यहाँ पे दे रखा था पिंग अ डिवाइस. ना एक्चुअली रियल वर्ल्ड में नहीं देखा हूँ ये टाइप ऑफ. रियल वर्ल्ड में आपको एग्जामिन करने के लिए पूरी एक डिक्शनरी यूज करनी पड़ती है. बिकॉज अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे बोल रखा था कि इफ यू हैव टू फाइंड द कमांड इंजेक्शन अटैक, you have to manipulate the data. कमांड इंजेक्शन अटैक आपको कहीं जहाँ पे भी आपके क्लाइंट की यूजर इनपुट हो सकता है. It depends on that. So सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक एक पूरी सारी चीज़ें.
ओके, सो ये जो मैं बुक्स बता रहा था तो ये इम्पोर्टेंट है। सर रिवर्सल एक मेथड है